गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेकंड मलेरिया वैक्सीन। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन जो है उसको, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है मैन्युफैक्चर की है, उसको प्री क्वालिफाइड वैक्सीन्स की लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है। तो ये R21 वैक्सीन जो है ये सेकेंड मलेरिया वैक्सीन है जो कि प्री क्वालिफाइड की गई है WHO द्वारा। प्री क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि लार्जर एक्सेस देना है वैक्सीन्स का, ताकि मलेरिया को बच्चों में रोका जा सके। तो प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस के अंदर WHO क्या करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लगाता है, देखता है कि वैक्सीन सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रही है कि नहीं। उसी के बाद जो है ये प्री क्वालिफिकेशन दी जाती है। अगर हम मलेरिया के बारे में देखें, मलेरिया एक डिसीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है और ये ह्यूमंस में इन्फेक्टेड मस्कीटो की बाइट से फैलती है। तो आपके 5 तरह के ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम, ये अफ्रीका में होता है, सबसे कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया है। प्लाज्मोडियम विवैक्स, जो कि इंडिया में आपको बहुत देखने को मिलेगा। एशिया और साउथ अमेरिका में खासकर कंट्रीज़ में ये सबसे ज़्यादा फैलता है और ये लिवर में 3 साल तक रहता है, तो बार बार ये रिलैप्स होता रहता है। प्लाज्मोडियम ओवाले, ये आपका वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है और ये कई सालों तक जो है लिवर में रहता है और सिम्टम्स प्रोड्यूस भी नहीं करता। ठीक है। ऐसे ही प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नॉलेसी है, जो कि बहुत ही रेयर हैं। ओके। अगर हम मलेरिया के बारे में देखें कैसे स्प्रेड होता है, तो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, जिसको हम नाइट बाइटिंग मस्किटो भी कहते हैं, उसके थ्रू ये फैलता है। ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके ये लिवर में चला जाता है, वहाँ पर ही रहता है कई सालों तक, कई बार 3 साल 4 साल तक रहता है और ये मल्टीप्लाई होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है। और मलेरिया जो है वो ह्यूमंस में तो ऐसे कम्युनिकेट नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं फैलता। बट अगर आपको मलेरिया है और आपको वो कोई जो है मस्कीटो बाइट करेगा, वही मस्कीटो किसी और को बाइट कर गया, तो ऑफकोर्स उसको भी मलेरिया होने का चांस हो जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, चिल्स, डिस्कम्फर्ट रहता है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, मसल और जॉइंट पेन, फैटीग, रैपिड ब्रीदिंग, रैपिड हार्ट रेट, कफ, ये सब चीज़ें जो हैं मलेरिया में देखने को मिलती हैं। अब अगर देखें तो मलेरिया की वैक्सीन बनाने में क्या दिक्कत रही है? एक तो ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है कोई, फिर डेवलपर्स भी बहुत कम है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी भी है कोई भी वैक्सीन पैरासाइट के अगेंस्ट बनाने के लिए। ठीक है। तो मलेरिया पैरासाइट जो है उनकी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उनकी जो ये कॉम्प्लेक्स जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है मलेरिया इन्फेक्शन को, उसके बारे में भी हमें अंडरस्टैंडिंग अभी अच्छी नहीं है। मलेरिया पैरासाइट जो है वो जेनेटिकली भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इनके बहुत ही ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ पोटेंशियल एंटीजेंस जो है वो अवेलेबल होते हैं। इंडिया के सिनेरियो में देखें, इंडिया एक मलेरिया एंडेमिक कंट्री है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया 66% ऑफ मलेरिया केसेस को जो है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में रिप्रेजेंट करता है। इंडिया और इंडोनेशिया में लगभग 94% ऑफ मलेरिया डेथ्स इन दिस रीजन रिपोर्ट की गई हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 46% जो केसेस हुए इस रीजन में, वो प्लाज्मोडियम विवैक्स, जो सेकेंड टाइप आपने देखा था ऊपर, उस मलेरिया के स्ट्रेन से हुआ है। ठीक है। तो अब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए? साल 2000 से लेके अगर हम देखें तो इंडिया ने लगभग हाफ ऑफ द केसेस कम कर दिए हैं। मलेरिया डेथ्स भी जो है वो 66% कम हुई हैं। इंडिया ने 2016 में एक नेशनल फ्रेमवर्क निकाला फॉर मलेरिया एलिमिनेशन और 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग इंक्रीज़ की इसकी 25%, ताकि जो है हम मलेरिया फ्री कंट्री बन सकें 2027 तक और इसको प्रॉपरली एलिमिनेट कर सकें 2030 तक। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु जो है वो हैवी रेनफॉल से बैटल कर रहा है। थ्रू आउट दिसंबर मैसिव फ्लडिंग हुई है वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस रेनफॉल, साइक्लोन मिशोंग की वजह से भी वहाँ पर जो है वो ये रेनफॉल देखने को मिली। अगर हम सिंस अक्टूबर 1 का आंकड़ा देखें अभी तक का, 450 मिलीमीटर की रेनफॉल वहाँ तक अभी तक रिपोर्ट की जा चुकी है। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है? ये एक मेजर परमानेंट फीचर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट सिस्टम का, जिस आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि मॉनसून विंड्स जब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जो है ब्लो होती हैं, इस वाले जो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पीरियड के बीच में, तो ये बीच में से बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिकअप कर लेती हैं। जब ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक करती हैं, फिर ये सारा जो मॉइस्चर इन्होंने पिक किया होता है, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, साउथ तेलंगाना और कर्नाटका जैसे रीजन्स में ये डंप करती हैं। वहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। ठीक है। इसको विंटर मानसून या रिट्रीटिंग मानसून या रिवर्स मानसून भी कहते हैं। ये 3 मंथ्स पीरियड तक ये वैलिड रहता है, अक्टूबर से दिसंबर तक। और ये क्यों होता है, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून को? तो जब ये आपका ITCZ,
जिसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बेसिकली ये क्या है, आईटीसी जेड, जहाँ पर ट्रेड विंड्स जो है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर की कन्वर्ज होती हैं, उस रीजन को, उस लाइन को, एक लाइन होती है, उसको हम आईटीसी जेड कहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए भी यही प्राइमरी फैक्टर होता है। उसकी साउथवर्ड मूवमेंट जब ये आईटीसी जेड की स्टार्ट होती है तो जो है ये नीचे की तरफ मानसून की जो है सिस्टम मूव होता है, और ये ऑफ कोर्स वहाँ से बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर इकट्ठा करके यहाँ पर बारिश करता है। ठीक है, तो तमिलनाडु ने लगभग 48% जो है वो रेनफॉल अक्टूबर से दिसंबर मंथ्स में जो है रिसीव करता है, तो तमिलनाडु खासकर, और रेनफॉल इसलिए इस एरिया में बहुत नॉर्मल है इस टाइम पीरियड में। लेकिन इस बार देखा गया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न तमिलनाडु जो है वो एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल वहाँ पर ऑब्जर्व की गई है। आईएमडी का कहना है कि 100% और मोर सरप्लस रेन सिर्फ 3 दिन के जो है पीरियड में हुई है पिछले हफ्ते। ओके, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो तमिलनाडु में बहुत विग्रस रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो आई थी उसकी वजह से भी जो है ये रेन्स है ये बहुत ज़्यादा हुई हैं उस एरिया में। हैवी क्लाउड कन्वेक्शन भी देखने को मिला है, जिसमें मतलब वार्म एयर ऊपर उठती है, कूल एयर सिंक करती है, उसकी वजह से जो है ये बारिश होती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राष्ट्रपति निलायम। ये टॉपिक आपके एक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस राष्ट्रपति निलायम में रिसेंटली जो है वो इनाग्रेट किए हैं। ये राष्ट्रपति निलायम क्या है, प्रेसिडेंट का ही एक ऑफिशियल रिट्रीट है, मतलब उनका एक दूसरा घर है तेलंगाना में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट में। वन ऑफ द प्रेसिडेंशियल रिट्रीट्स है इंडिया में, और सदर्न इंडिया में अकेला यही है एक। ठीक है, ये एक रेजिडेंसी हाउस है जो कि 1860 में ब्रिटिश टाइम पर कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो ये प्रेसिडेंट रिट्रीट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जब भी प्रेसिडेंट साउथ इंडिया में जाते हैं तो यहीं पर ही वो ठहरते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है कम से कम साल में एक बार यहाँ ज़रूर आते हैं और अपना नॉर्मल ऑफिशियल बिजनेस करते हैं, जैसे कि वो राष्ट्रपति भवन से करते हैं। प्रेसिडेंट रिट्रीट्स अगर हम देखें तो दिल्ली तो ऑफिशियल रेजिडेंस है, लेकिन 2 और भी इनके घर होते हैं प्रेसिडेंट के। एक तो राष्ट्रपति निलायम और एक राष्ट्रपति निवास, जो कि शिमला में मशोबरा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम अजय स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस, सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने राज्यसभा को बताया है पीएम अजय स्कीम के बारे में। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को मर्ज करके बनाई गई है। मेन ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, इनकम जनरेट करना टारगेट पॉपुलेशन की, वेरियस इनकम जनरेटिंग स्कीम्स, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू पॉवर्टी को जो है वो टारगेटेड पॉपुलेशन में कम करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो शेड्यूल कास्ट पीपल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम देखें तो उन विलेजेस में जहाँ पर 50% या उससे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है उनको जो है ग्रांट्स मिलती है स्कीम के अंदर। और 2021-22 से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इसके अंदर जो है डेवलपमेंट की जा रही है एससी डोमिनेटेड विलेजेस की आदर्श ग्राम बनाने में। उनको ग्रांट्स इन एड दी जाती है सोशो इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ एससीज के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स किए जा रहे हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेड टाइड। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा, जो कि कुरुचि कुपम ड्रेन को इंस्पेक्ट करेगी और देखेगी कि क्यों वहाँ पर रेड टाइड जो है पुडुचेरी में बन रही है। रेड टाइड क्या है, एक कॉमन टर्म है हार्मफुल एल्गल ब्लूम की। ये होता क्या है, जब कॉलोनीज ऑफ एल्गी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सी और फ्रेश वाटर में आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाते हैं, तो जो है ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी की वजह से जो कलर ऑफ द वाटर है वो रेड कलर में हो जाता है। और इसमें होता क्या है, क्यों होता है, ये पहले तो ये समझें कि केमिकल्स जो होते हैं आपके फार्मिंग या फैक्ट्रीज से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, जब ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं ये लैंड पर, तो ये फ़्लो होने लग जाते हैं ओशंस में, और ये एल्गी को जो है उसकी वजह से बढ़ने लगती हैं, उसकी वजह से ये रेड टाइड्स आपको फिनोमेना देखने को मिलता है। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, देखने में आपको ये रेड टाइड जैसे भी लगे, बट ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि रेड टाइड जो है पावरफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि फ़िश को, शेल फिश, मैमल्स या बर्ड्स को मार सकता है। ठीक है, ये हार्मफुल केमिकल्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पाट मित्रों। ये टॉपिक आपके
गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने एक पाथ मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बनाई है, ताकि एमएसपी और एग्रोनॉमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जूट फार्मर्स को दी जा सके। ये एप्लीकेशन जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाई है और इसका पर्पज़ है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस जो है और एग्रोनॉमी जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जूट फार्मर्स को दी जा सके। 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और ये यूज़र्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑफ कोर्स अवेलेबल होता है। और फार्मर्स जो है इसमें अपना पेमेंट जो होती है रॉ जूट की उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स लाइक चैटबॉट भी इसमें जो है वो इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? तो ये ऑफिशियल एजेंसी है। 1971 में इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और इसका एम है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना जूट कल्टीवेटर्स को। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वेरियस प्रोजेक्ट्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में है। ठीक है, 7 स्टेट्स में ये जो है स्प्रेड है। बेसिकली जो जूट ग्रोइंग स्टेट्स हैं, ये जो है जैसी भी क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी होती है जूट की जो फार्मर्स ऑफर करते हैं उसको एमएसपी पे ये खरीदता है और जो भी लॉसेज इस पूरे प्रोसेस में होते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीइम्बर्स कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि जो है सीआईएसएफ को पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी दी जाएगी। तो सीआईएसएफ जो है वो जस्टिस मुखर्जी कमीशन के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से 1969 में। वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर और ये एक आईपीएस ऑफिसर द्वारा हेडेड होती है जो कि डायरेक्टर जनरल रैंक के होते हैं। और इनिशियली तो ये इसका जो है मोटिव ये था कि सिर्फ गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, बट 2009 में सीआईएसएफ के मैंडेट को एक्सपेंड करके जॉइंट वेंचर्स और प्राइवेट अंडरटेकिंग्स को भी जो है इंक्लूड कर लिया गया। ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ विमेन जो है इनकी फोर्स में ही है ऑफ कोर्स सीआईएसएफ में इन कंपैरिजन टू ऑल अदर सीएपीएफ। और ये प्रोटेक्टेड पर्सनस जिनको Z+Z X या Y कैटेगरी सिक्योरिटी मिलती है वो भी सीआईएसएफ ही देता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is second malaria vaccine. This topic is important for your social issues. So World Health Organization has added the R21 Matrix M malaria vaccine, which has been developed by Oxford University and manufactured by Serum Institute of India, to the list of pre-qualified vaccines. So R21 is the vaccine, which is the second malaria vaccine pre-qualified by WHO. Pre-qualification means larger access to vaccines as a key tool to prevent malaria in children. And as part of the pre-qualification process, WHO WHO applies international standards to evaluate whether the vaccines are safe, effective, and they are being manufactured to international standards. So what is malaria? Malaria is a disease which is caused by Plasmodium parasite, and this parasite can spread to humans through the bites of infected mosquitoes. So there are five types of Plasmodium parasites. Plasmodium falciparum, which is found in Africa mainly, and it is the most common type of malaria parasite. And it is of course also responsible for the most malaria deaths worldwide. So Plasmodium vivax, which is found in Asia and South America, and it is also found in almost 50% of the cases in India, and it can stay into the liver for up to 3 years, and that's why it can result in relapses. There is also Plasmodium ovale, which is mainly found in West Africa, and it can remain in the liver for several years without even producing any symptoms. The other two type, Plasmodium malaria and Plasmodium knowlesi, they are very rare and they are found in Africa and Southeast Asia respectively. So how does this malaria spread? So Plasmodium parasite is spread by female Anopheles mosquitoes, which are also called the night biting mosquitoes. And once a person is bitten, the parasite enters the bloodstream and it travels to the liver, where it invades the red blood cells, and the parasites grow and multiply in the RBCs. However, malaria does not spread directly from person to person, and it can only infect a mosquito can only infect a person with malaria. How? But how basically, if you have malaria and if the mosquito bites you, that malaria parasite would travel with that mosquito, and if that mosquito bites another person with that same and if that mosquito bites another person, that other person also gets the malaria, or there is a huge chance that that person would also catch malaria. So there is no person to person transfer directly, but it gets transferred indirectly through the mosquito.
So what are the symptoms of malaria? So generally fever, chills, general feeling of discomfort, headache, nausea, vomiting, all this happens. And uh, what are the barriers to developing a malaria vaccine? So lack of traditional market, few developers, technical complexity of developing any vaccine against a parasite. Malaria parasites also have a complex life cycle, and we have a poor understanding of the complex immune response to the malaria infection. So malaria parasites are also genetically complex. They so we so that's why they produce thousands of potential antigens. If we look at India's scenario, then India is a malaria endemic country, and as per the World Malaria Report of 2023, which was released recently, we discussed about it also. India accounted for about 66% of malaria cases in the World Health Organization's Southeast Asia region in 2022. So India and Indonesia accounted for about 94% of all malaria deaths in this region. And the report also says that 46% of all cases in the region were caused by Plasmodium vivax, which is a protozoal parasite and a human pathogen. So what are the steps which have been taken by the government to eradicate malaria? Since the year 2000, India has cut malaria cases by more than half and the number of malaria deaths by more than 66%. And in 2016, Government of India introduced this first ever national framework for malaria elimination, under which we have a vision of being a malaria free country by 2027 and eliminate it by 2030. So in 2019, Government of India increased the funding by more than 25% for this national vector-borne disease control program and increased support as a donor to the Global Fund to fight AIDS, tuberculosis, and malaria. So the next topic is northeast monsoon. This topic is important for your environment section. So Tamil Nadu has been battling with heavy rainfall throughout December, and apart from that, of course, there was also cyclone Mishong, which caused massive flooding there. So since October 1, if we look at the figures, the rainfall recorded over Tamil Nadu has been about 450 millimeters. And what is northeast monsoon? So this is basically a major and permanent feature of Indian subcontinent's climate system, and as the name suggests, it is basically monsoon winds. When they blow from northeast to southwest, these winds pick up moisture from the Bay of Bengal, and then they dump that entire moisture over the southern states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, and even southern Telangana and Karnataka. So because it is retreating form of monsoon, that's why it is also called winter monsoon, retreating monsoon, or reverse monsoon. So it remains active during the 3 months period of October to December. And one of the primary causes of this northeast monsoon is the ITCZ, or the intertropical convergence zone, when it starts southward movement. So ITCZ basically is the point where the trade winds from northern and southern hemisphere converge. So when it starts moving downwards, this causes this northeast monsoon. Okay, so why generally Tamil Nadu sees rain in December. Out of the total annual rainfall, Tamil Nadu receives about 48% of the rainfall during these 3 months, which are important for, of course, rabi cultivation in that state. So how much rain did Tamil Nadu receive this week? So three districts of southern Tamil Nadu saw exceptionally heavy rainfall during the last few days, and as per IMD, uh, these districts had received about 100% or more surplus rain during these 3 days over the previous week. So, what are the reasons behind this record rainfall over southern Tamil Nadu? Northeast monsoon remained vigorous over this area, and also there was cyclonic circulation developed in the southern southwest Bay of Bengal, and there is also heavy cloud convection which was observed here, in which warm air rises and cool air sinks, and it transfers heat and mixes it within a fluid and causes heavy rainfall. So the next topic is Rashtrapati Nilayam. This topic is important for your governance section and also your art and culture section. President of India has recently inaugurated various tourist attractions at Rashtrapati Nilayam recently. Rashtrapati Nilayam is also the residency house, and it is also the official retreat of the President of India. So it is located in Sikandrabad cantonment of Hyderabad, Telangana. It is one of the presidential retreats in India and only one present in South India. So Residency House was constructed in 1860 as the country house of the British resident. After Hyderabad's annexation in 1948, it became President's Retreat, and it is being since then used as the official
as a residence of the president whenever he or she travels to the south of India. So president stays at this residence at least once a year and conducts his or her official business. So what is president's retreats? So Delhi, you know that it is the official residence of the president, but there are two other retreats for the president in India. First, of course, is the Rashtrapati Nilayam of Telangana, and the second one is the Rashtrapati Niwas at Mashobra in Shimla. So the next topic is PM Ajay scheme. This topic is important for your social issues. So recently, Minister of State for Social Justice and Empowerment has informed the Rajya Sabha about the PM Ajay scheme. So Ajay means Anusuchit Jati Abhyuday Yojana, and it is a 100% centrally sponsored scheme. It is a merged scheme of the three centrally sponsored schemes called the Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana, Special Central Assistance to Scheduled Caste Subplan, and Babu Jagjeevan Ram Chhatravas Yojana. Okay, so the main objective of this scheme is to increase the income of the targeted population by way of income generating schemes, skill development, and infrastructure development. So the aim is to reduce the poverty among the targeted population and bring them above the poverty lines. So what is the eligibility criteria? Scheduled caste people who are living below the poverty lines are eligible for getting the benefits under the scheme. In case of infrastructure development, the villages having 50% or more SC population are eligible for grants under the scheme, and this scheme is being implemented since 2021 and 2022 period as three components, which are SC dominated villages development into Adarsh Gram, grants in aid for betterment of SCs, construction of hostels in higher educational institutions, etc. Okay. So the next topic is red tide. This topic is important for your environment section. So recently a three-member committee has been appointed by the principal bench of the National Green Tribunal, inspected by Kuruchikuppam drain. So red tide is a common term used for harmful algal bloom, and it occurs when colonies of algae plant-like organisms which live in the sea and fresh water grow out of control. So basically it happens because of overgrowth of algae, which causes the color of the water to turn red. So why does it occur? Chemicals from farming, factories, sewage treatment plants, etc., can become dissolved in water on the land, and this water, which is also called runoff, eventually flows into the ocean, and it causes the algae to grow faster, and which leads to red tides. So it is not, it may look good, but it is not good. In fact, it produces powerful toxins or the harmful chemicals which can kill fish, shellfish, mammals, and birds. So if people eat those fish, then of course they will also ingest these toxins, and which can make them sick. Okay. So the next topic is Path Mitro. This topic is important for your governance and your economy section. So Ministry of Textiles has launched this Path Mitro mobile application to provide important information about MSP and agronomy to the jute farmers. So this application has been developed by Jute Corporation of India Limited, and the aim of this application is to provide information about minimum support price and agronomy to jute farmers. It is available in 6 languages, and it is made available for the users free of cost, and the farmers would be able to track the status of their payments for the raw jute sold to JCI under MSP operation. So it also has features like chatbot, which are included for the queries of the farmers. So what is Jute Corporation of India Limited? It is the official agency of Government of India with the aim to provide minimum support price for jute cultivators, and was set up in 1971. So it is the implementing agency of various projects of Government of India for enhancement and betterment of jute crop and the lives of jute growers. So it is under the administrative control of Ministry of Textiles. Remember this, it is not under the Ministry of Agriculture. So it is spread in 7 states which are eminent for jute growing in India: West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya, Tripura, Odisha, and Andhra Pradesh. So as per the policies of the government, JCI is obliged to buy whatever quantity of jute is offered at support rates by the growers without any quantitative limit, and the losses which are incurred by JCI while implementing this policy is to be reimbursed by the Government of India. Okay, so the next topic is Central Industrial Security Force. This topic is important for your security section. So Union Home Ministry has approved the deployment of CISF, Central Industrial Security Force, in the Parliament complex as per the recent government order. So CISF was established after the recommendation of Justice Mukherjee Commission, and it was set up as an act under an Act of Parliament in 1969. It is one of the 7
Central Armed Police Forces under the Ministry of Home Affairs. It is headed by an IPS officer with the rank of Director General, and initially its mandate was restricted to protecting government-owned industries, but later on it was expanded to include joint ventures and private undertakings in the year 2009. It also provides consultancy services to the private sector. It has the largest percentage of women in its force in comparison to all other CAPFs. Presently, it is also providing security to the protected persons classified as Z plus category, security, Y category, X category, Z category, etc. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.